every part when we train, it doesn't grow by accident. We have to control every rep. So today I'll show you 6 more exercises, 2 for chest, 2 for shoulders, and 2 for triceps, and we will be fixing them. Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. तो हम आ चुके हैं आज डायरेक्ट जिम एंड आज हमारा 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं. वी हैव स्टार्टेड आवर थर्ड मंथ एक्चुअली, सो दिस वुड बी आवर वीक 9 और समथिंग. तो अभी का जो हमारा फेज है, वी आर फिक्सिंग द एक्सरसाइजेज दैट वी परफॉर्म. ये हमारा वीक 2. लास्ट वीक में हमने पुश डे पे 2 एक्सरसाइजेस हमने लगाई थी, चेस्ट के लिए, 2 शोल्डर के लिए, 2 ट्राइसेप्स के लिए, with fixing them with the mistake. So today I'll show you 6 more exercises, 2 for chest, 2 for shoulders, and 2 for triceps, and we will be fixing them. I wasn't planning to change the workout that we did last week, क्योंकि हर week workout change करना is not good for muscle growth. तो हम we have to keep the same workout for a month or two, जिससे हमारी जो you know changing the exercises every week is not something that is going to build muscle. But अभी के लिए जो है हम we are fixing every exercise that we perform. That's why I have to change the whole thing again. So last week जो हमने exercises लगाई थी with mistakes and how to fix them, आज we will add 2 more exercises every part. We will see the mistakes and we will fix them together today. एक बार जो हमारा fixing वाला part, once we are perfect with every exercise, उसके बाद हम अपना खुद का एक जो है प्लान बना सकते हैं, वर्कआउट प्लान, एंड वी कैन फॉलो them accordingly. अभी के लिए 6 exercises, 2 for chest, 2 for shoulder, and 2 for triceps. The mistakes and how to fix them. हमारा वर्कआउट भी हो जाएगा, हमारा मिस्टेक भी फिक्स हो जाएगा. So I'll see you on the first set. Let's go. Okay, so we are done with the warm up. आज हम as usual start कर रहे हैं with the chest, and chest के लिए हम पहले exercise लगा रहे हैं flat chest press. And the mistake that we make is हम हमेशा जो है chest press को we always bounce the weight from the chest. जब हम नीचे आते हैं then we push, जैसे हम jerk और I would say bounce the weight. बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हम weight जो है reps लगाते हैं. That is one of the mistakes and that's what we are going to fix. So chest press के लिए we will follow 3 rules. Touch, pause, then press. रॉड को चेस्ट के साथ टच करेंगे, देन पॉज, उसके बाद कंट्रोल प्रेस. वी विल गो फॉर 4 सेट्स, 1 वार्म अप, 3 वर्किंग. लेट्स गो. ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम लगा रहे हैं चेस्ट के लिए, वी विल गो फॉर inclined chest press. So the mistake that we make is we stop our reps too high. When we push, हम यहाँ पे पूरा स्ट्रेच करते हैं, जो हमारा रेंज है वो कंप्लीट हो जाता है, रैप कंप्लीट हो जाता है, और जो टेंशन होता है मसल पे वो खत्म हो जाता है. सो टू कीप द टेंशन ऑन द मसल, वी हैव टू स्टॉप द रैप इन हाफ वे. पूरा गिव अप नहीं करना है, हाफ वे से वी विल कम बैक. देन नीचे आते टाइम वी विल स्ट्रेच अ लिटिल बिट, होल्ड, देन वी विल गो स्मूथ. सो ऊपर आते टाइम डू नॉट गिव अप, आधे रास्ते से रैप वापस, देन फुल स्ट्रेच, then we will go smooth. This is how we will perform today and this is how we will fix it. We'll go for 3 sets and then we'll have shoulder. So yep, let's get this done. Okay, so we are done with the chest. Next we'll go for the shoulder. So last push day में हमने dumbbell press लगाया था shoulder के लिए, and we fixed the mistakes and everything that we used to do in the dumbbell press, shoulder press. So आज हम machine use कर रहे हैं,
And machine press में the mistake that we make is we always cut the reps at the bottom. जब हम नीचे आते हैं, we cut the rep and we go back. That is the mistake that we are going to avoid today. We have to come all the way down जब तक हमारे जो डंबल है या मशीन है हमारे जो फेस के लेवल तक जब आएंगे उसके बाद हम वापस जाएंगे, देन वी विल कम ऑल द वे डाउन, देन गो अप. सो नीचे आते टाइम वी हैव टू गो एज मच एज वी कैन, देन गो बैक. रेप्स को शॉर्ट कट नहीं करना है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फिक्स टुडे. विल गो फॉर one warm up set, 3 working sets, and we'll be done with this one. So yep, let's go. Full range, no shortcuts. Yep, yep. Mm, 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 mm. Okay, so next जो हम लगा रहे हैं shoulder के लिए, we will go for cable lateral raises, and we will fix this one. So the mistake that we make is when we go for the lateral raises for the cable, हमारा जो 90% impact है वो हमारे ट्रैप्स पे आता है, because we try to we try to grab the weight with the shoulder, but जो हमारे ट्रैप्स हैं वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं because we are trying to train the shoulder. तो यहाँ पे हमारा जो है ज्यादा इन्वॉल्व होता है. So how we are going to fix it? When we do the lateral raise, instead of pushing with the shoulder, we will try to push with the elbow, जिससे हम ट्रैप से ज्यादा शोल्डर को इन्वॉल्व करेंगे by involving the elbow. So we will lead with the elbow. एल्बो से हम ट्राई करेंगे ऊपर आने का, जिससे हमारे ट्रैप्स पे नहीं हमारे शोल्डर पे इंपैक्ट आएगा. सो विल गो फॉर 3 सेट्स and we will see how it works. So let's go. Yep, yep. Mm, 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 mm. All right, so we are done with the shoulder part. Now we'll go with the triceps. Triceps हम start करेंगे with close grip bench press. And the mistake that we make is we always turn it into the chest movement. हम elbows expand करके जब हम push करते हैं हमारे chest पे pump होता है instead of our triceps. We are going to fix that. We have to take care of 3 things: elbows close, chest out, and control the depth. हम give up नहीं करेंगे. We will control the reps at the bottom. So keep your elbows in and let the triceps drive. We'll see how it works. We'll go for 4 sets. One will be warm up as usual, 3 working sets. Let's see how it works. Let's go. Yep. Okay, so we have a finisher for the triceps. We'll go for cable overhead tricep extension. The mistakes that we make, we will avoid them today, and 3 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे आज. We always use momentum to lock down. जब हम लॉकआउट करते हैं अपना रैप, we always use the momentum. जो हम पीछे से हमारा momentum आता है हम उसको यूज करते हैं लॉक करने के लिए. We will control that. We will go slow lockout, then hard squeeze, then slow negative. वापस आने के टाइम we will go slow, then we will come slow, slow lockout, and then hard squeeze. ठीक है? So we will control the reps, and we will try to go perfect as much as we can. We'll go for 3 sets. We'll be done for the day. So let's try. Let's see how it works. Yep. Okay. Let's go. Slow lockout, hard squeeze, and then control negative. Let's go. Yep. Yep. Yep.
Okay, so ये थी हमारी 6 exercises for the push with 6 mistakes and how to fix them. Not only our push, but every part when we train, it doesn't grow by accident. We have to control every rep. So I'll see you in the next one. Till then, stay fit, stay strong.